threatening my son also that अगर वो हमारे premises में घुसेगी ना तो मेरे भाई और बहन जो है ना बहुत खतरनाक है, उसको वहां रहने नहीं देंगे. If he says so, he's throwing a challenge to the order of the court. तो वहीं पे करेंगे. Let them be put under arrest. नहीं उसने कुछ नहीं किया है. अब भी पास कर देते हैं ऑर्डर. अभी कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया उसने. I have filed, my lord, I have filed that all the documents. इसको भी तो सुनवाई का मौका मिलना चाहिए हमारा. इसने कुछ नहीं किया है. Only 3,000 rupees वो मेंटेनेंस दे रहे हैं, उसको कंप्लायंस के लिए मैंने पसीने छूट जा रहे हैं सर. वो भी मेरा बेटा अभी लॉ पढ़ रहा है सर, उसको मेरे को पढ़ाना है इस वजह से. नहीं my lord, and on that time she is not at all a counsel and not at all an advocate because she get a provisional certificate. तो let her be party, उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ड्रॉ कर देते हैं. To file additional reply. तो एक सार डेट कोई भी दे दीजिए, 2-3 दिन का देंगे तो फाइल कर दो. My lord, आज रिस्पोंडेंट्स के अपीयरेंस का वो था मैम. My lord, they have to appear all the respondents 1, 2 and 3. 1, 3 and 4, my lord. Appear for argument before charge. My lord, इसमें Where सर are they? वो लोग प्रेजेंट भी हैं. Where are they? वो प्रेजेंट भी हैं. Ask them what they want to say. सर इसमें मैं एडिशनल रिप्लाई ये फाइल करना चाहता था कि जो ऑर्डर पास हुआ दैट वाज ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ मैरिज. रेजिडेंस ऑर्डर था 2020 में. अब अभी नवंबर 23 में इनका डाइवोर्स भी हो चुका है, पर दे आर रेडी टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स. पर अब डाइवोर्स हो गया सर, अब एक कमरे में लेना है तो इनकी समस्या है कि वहां अब पड़ता नहीं लड़ाई झगड़ा, तो दे आर रेडी फॉर द अल्टरनेट एकोमोडेशन और द रेंट. तो मैं एक रिप्लाई दे देता, 2-3 दिन का ही टाइम दे दीजिए, फिर उसको सुन लीजिए. बस इतने मेरे पे. What you say? No, my lord. After 4 years, they are ready to compliance the order, my lord. It's already 4 years passed, my lord. And I have filed another documents today. I have that he is entering my office also and harassing me, instigate his counsel to file complaint against me, and many right to information letters are there. What he is doing? My lord, his counsel, advocate Suman Thakur, was filing false complaint against me, and on that time she was not at all an advocate also, and she is appearing in my case and as a Nyay Mitra. And then on August, then I filed the complaint. He write that मैं तो केवल उनकी वो हूँ, counsel हूँ उनके husband की. Then he write that she is a counsel of my husband. And before that, after this filing this contempt, my lord, she is regularly filing a complaint in my office, my lord, that I am harassing that lady by instigating by the respondent number 1, my lord, and filing a right to information also. And he himself appearing on 6th July 2023 to give a statement on that complaint, my lord. That issue may be a different issue. How can you attach it with the No, my lord, there is a order that he should not enter in my office and not interfere in my office premises, my lord. There is another contempt made out, my lord. I have not talking about that for that, but now they are taking time and regularly he is harassing me on my office, and he is threatening my son also that अगर वो हमारे premises में घुसेगी ना तो मेरे भाई और बहन जो है ना बहुत खतरनाक है, उसको वहां रहने नहीं देंगे. He is talking like this type. He is threatening my son also, my lord. If he says so, तो वहीं पे करेंगे. Yes, my lord. If he says so, he's throwing a challenge to the order of the court. तो वहीं पे करेंगे. Let them be put under arrest. My lord, see that the order is complete. नहीं ये जो बोल रहे हैं my lord, order is passed on 2020 and my divorce was on this November 2023, my lord. नहीं कर सकते. We will ensure that she is lodged there only. नहीं. What you were saying may be correct. Sir, that's a logical. It's okay. There will be daily quarrel, this, हाँ, that. Yes, But then if you throw a challenge, we'll ensure that she is put there only. And the person who are objecting, they should be put behind the bars. उसने पर उसने ऐसा कुछ किया नहीं सर. नहीं उसने कुछ नहीं किया है. अब भी पास कर देते हैं ऑर्डर. अभी कुछ नहीं किया सर. कुछ नहीं किया उसने. I have filed, my lord, I have filed that all the documents. इसको भी तो सुनवाई का मौका मिलना चाहिए हमारा. इसने कुछ नहीं किया है. No, without sir, 4 years since contempt for the document here, I can pass an order on that. Are you ready to argue on charge?
सर मुझे 2 दिन का टाइम, मैं आज ही फिर 2 दिन परसों लगा दीजिए, मेरा कोई दिक्कत नहीं है कि आ जाएगा कि जब व्हेन द ऑर्डर वाज पास्ड द मैरिज वाज सब्सिस्टेंस। अब 3 साल बाद डाइवोर्स हो चुका है और उसके अलावा माइनर, उसके अलावा अल्टरनेट एकोमोडेशन के लिए तैयार हैं वो, और या रेंट जो होगा वो रेंट भी दे देंगे रीजनेबल। सर अभी हम कंप्लायंस नहीं करवा पा रहे हैं सर डोमेस्टिक वायलेंस तो का वही सर, तो compliance है। फिर उनका जब रेंट का मैं एग्जीक्यूशन कैसे करवाएंगे सर? ओनली 3000 रुपीज वो मेंटेनेंस दे रहे हैं, उसको कंप्लायंस के लिए मेरे मैंने पसीने छूट जा रहे हैं सर। मैंने 12 मंथ के बाद मैं उनका 125(3) में जा जाके उनका कंप्लायंस में ले रही हूँ। वो भी मेरा बेटा अभी लॉ पढ़ रहा है सर, उसको मेरे को पढ़ाना है इस वजह से। continuous he is harassing with his माने counsel कम girlfriend और any माने मेरा थर्सडे या फ्राइडे रख दीजिए, मैं एडिशनल रिप्लाई फाइल कर देता हूँ मैडम, मैं कोई डिले नहीं चाहता। Where have you seen any accommodation somewhere else? It's practically that will be, will you be able to stay there? So, my lord, they are given 1 BHK, my lord. They are offering me 1 BHK, and that premises is a 3000 square feet first floor. If they give me a land, vacant land also I can build up for that, my lord. But they are offering rent, my lord, and how can I taken the rent? Then again after 3 months or 4 months I for execution for rent ये my lord, मुझे बार बार वो लगाना पड़ेगा कि रेंट दीजिए साहब, मैं फिर कैसे करूंगी इसमें सर my lord? मैंने 4 years में तो मैं हाई कोर्ट की कंप्लायंस नहीं करवा पाई my lord. 4 years, it's already completed 4 years my lord. 21st 1/2020 में ये ऑर्डर पास हुआ है my lord. मैंने इट्स ऑलरेडी पास्ट 4 years, उसको मैंने हाईकोर्ट के ऑर्डर को मैं कंप्लायंस नहीं करवा पाई। मिस्टर काउंसिल सेड दैट दे आर ऑफरिंग 1 BHK rental house for me. Then how can I take the rental charge from that respondents? Ask your client to stay somewhere in rented house. Let her Exactly, occupy. सर दे आर ऑलरेंटेड स्टेइंग इन द रेंटेड हाउस, चर्च के इस पे रहते हैं। नो माय लॉर्ड, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे को आप 2 दिन का टाइम दे बिठा दीजिए, मैं सब दीजिए। चीज, ये तो चर्च की रेंटेड हाउस में चर्च के रह रहे हैं, तो खुद का नहीं है। अगेन मिशन क्या है वो? सेम माय लॉर्ड। इसीलिए मैं सिर्फ आप 2 एक दिन का टाइम कमिश्नर वो बना दीजिए या तो फिर उनका एवरीथिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन द करवा कार्ड। दीजिए सर। ये लोग खुद चर्च किस में किराए से रह रहे हैं। नो माय लॉर्ड। ये ठीक है। What are the evidence that they are entering into a premises? Directly, I have no evidence, my lord, because on that committee meeting, there is no written minutes. The one is about the household, the other restraint order is about the Premises on the office, my lord. office. Yes. Anything? My lord, I have filed today, my lord, that the council of respondent number 1 has continuously filing a complaint against me on my office. मल्लिका बल द्वारा परेशान किए जाने बाबत. That is page number 3. Then again, that is on 23rd February 2023, after filing this complaint, my lord, contempt. Then again she filed 15th March 2023. मल्लिका बल पति शैलेश जैकब द्वारा अत्यंत क्रूरता पूर्वक. Who is she? Who is she? She is a counsel of respondent number 1 in a family court, my lord. Then, and on that time, How the council can do this? मुझे मत आइए फिर। no, my lord, and on that time, she is not at all a counsel and not at all an advocate, because she get a provisional certificate on 15th March 23. Forget it. हाँ. Who is? What is her entity? मेरा What is her entity? क्या नाम बता? Advocate Suman Thakur. Who is she? मैं आज ही अपियर हुआ हूँ, मैं इसे सब पूछ लेता हूँ। मैं मुझे इसीलिए 2 दिन का मैं टाइम चाह रहा हूँ सर, मैं बोनाफाइडली चाह रहा हूँ। तुम्हारे सीनियर के जय शर्मा, इनके सीनियर कोई जय शर्मा है, उनकी जूनियर ऐसे बोल रहे हैं। को अपॉइंट किया, उसको नहीं जानते। अच्छा, इनको नहीं जानते, इसको जानते भी नहीं है। जय शर्मा तो लेट हर बी पार्टी, उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ड्रॉ कर देता है। If she is abetting it, she is disturbing this, she will answer it whether he has instructed. ठीक है, क्या नाम बता? Advocate Suman Thakur. By this order of this court, she appears on behalf of. उसको जवाब देने के The टाइम case was fixed for argument before charge today.
She appeared and sought for time. The applicant who is in person would submit. The order has not been complied till date, and the respondents were also directed not to create any violence or aiding or abetting in entering the place of employment of the applicant for such process, but the non-applicant, what is his name? Shailesh Jacob. Shailesh Jacob. Proof. 1. Suman Thakur is making the complaint, and different applications are being moved, which amounts to ये आज ही पेश की, हमको कुछ मिला नहीं है। वो तो जानते नहीं है ना, वो आएंगे बताएंगे, उनको पार्टी बना देते हैं। ही डजंट नो, वो लिखा है ना अभी, वो तो जानते ही नहीं, बोले हमने इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी, तो भाई उन्हीं से बुला के पूछते हैं इंस्ट्रक्शन दिया। आपको देने की जरूरत भी नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है। Which are abetting, causing harassment to the petitioner. Is Shailesh Jacob next. Shailesh Jacob, and she refers to certain document filed before this court. Shailesh Jacob, who is in person before this court, would submit. He has not instructed any Suman Thakur to move certain application. Therefore, prima facie it appears that in absence of any such instruction to Suman Thakur, how the abatement is caused, it is the Suman Thakur would be the best person to answer. Therefore, a notice be issued to Suman Thakur. कहाँ पे रहते हैं ये? कहाँ है? एड्रेस वगैरह कहाँ है? सर ये सब करारी मस्तूरी। Show cause as to why she not be made a party as a contemner, to abet the order of this court, to disobey this order of this court dated 21/1/2020 in criminal revision number 594 of 2014. Notice be issued. Pay process. Notice be issued. My lord, And think over that alternate. That will something. My lord, that's not for something. rental, my lord. Huh? Not for rental, my lord. How can I? I understand that. Then they will deposit some corpus somewhere. We'll ensure that. Yes, my lord. We'll ensure that that part is secured for some time. So far that is not complied, at least for this time. You have to deposit some corpus there somewhere. List it on. Think over that. Instead of daily tension, think over that. Both, it is for the both. But they are offering 1 BHK, my lord. Whatever, that is for you to think. Okay, my lord. For you to. Yes, my lord. सर, उनका भी प्रेजेंट है, दो और रेस्पोंडेंट हाजिर हैं। हाँ, उनका प्रेजेंट लगा दीजिए। सब हाजिर हैं। What do they say? They want to say anything or should I frame the charges? उनका ऑर्डर सब रिमेन प्रेजेंट करके दे आर प्रेजेंट। The respondent shall remain present in the next date. Since the date has been adjourned at the request of the respondent counsel, the respondent shall remain present on the next date of hearing in person. Okay, sir.